Welcome, everybody. My name is Dr. Ingrid Tyler. I'm the Executive Medical Director for Population and Public Health, and I'm here today to talk to you about the COVID vaccine. मेरा नाम डॉक्टर इंग्रिड टाइलर है। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ फ्रेजर हेल्थ में, और मैं आज आपको यहाँ पे फ्रेजर हेल्थ से मुतालिक और वैक्सीन से मुतालिक मालूमात देने के लिए हाजिर हुई हूँ। So thank you very much for joining us today. I have I'm here with Shazia Masood, and I am a physician working with Fraser Health. मैं Fraser Health के साथ काम कर रही हूँ as a doctor यहाँ Surrey Memorial Hospital में, and I'm here. मैं आज यहाँ पे हूँ डॉक्टर टाइलर के साथ ताकि आपको उर्दू में सारी मालूमात फराहम की जा सके. And also I'm being supported by अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हबीब हुसैन है। मैं पॉलिसी एनालिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे आज डॉक्टर इंग्रिड टाइलर को सपोर्ट कर रहा हूँ तर्जुमे के लिए, ट्रांसलेशन के लिए. So thank you very much for being here today. I have a few things I'd like to share with you about the COVID vaccine and about how you can access and get your COVID vaccine. And then I will be answering some common questions about COVID and COVID vaccination. आपकी यहाँ आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आज की इस महफिल का मकसद ये है कि हम आपको कोविड वैक्सीन से मुताल्लिक़ कुछ इंतहाई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता सकें और ये बता सकें आपको कि इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीका नहायत आसान और आपके लिए नहायत मुफीद है. So very importantly, I want to share with you today that COVID-19 vaccines are safe and effective and that they save lives. We need to get vaccinated in order to be able to put this pandemic behind us as a society and a group of people in Fraser Health in British Columbia. Public health agencies around the world agree that the COVID-19 vaccines are safe. Even though they were developed quickly, all the safety steps were taken and all of the necessary data was collected and reviewed by all the usual regulating authorities before the vaccine was made available to the people. Millions of people have already been vaccinated, which helps show just how safe the vaccines are. And in fact, there's much data that shows that the vaccines are a lot safer than becoming infected with COVID-19. The vaccine is safe for breastfeeding and in pregnancy, and in almost all medical conditions that are common, like diabetes, hypertension, even immunosuppressive diseases. The vaccine is safe and can be given in all those cases. There is no reason to not get the vaccine if you're planning on getting pregnant in the future. When you do get immunized, you are protecting not only yourself, but everybody in your family and your community, your friends, and others who you come into contact with. So the more people in a community who get immunized, the more protection that community has, and the less likely it is that COVID will spread, and soon we can get back to our usual lives as we enjoyed them back in 2019. For now, though, until we get enough people vaccinated, even if you have had the infection or you get the vaccine, we're still asking everybody to continue to follow the public health orders until enough people are vaccinated. So I'm here to answer your questions, but I'd like to encourage you all to please register for a vaccine appointment. The registration information is posted. Is that correct? It's right there. So we may be able to zoom in on that during this presentation. So you all know the website to go to register for your vaccine. It's possible that language barriers could be a concern when you're registering for the vaccine. So there is an option to phone in, and when you phone in, you can get a translator. So to register for your free vaccine,
you would call 1-833-838-2323 and press the number 3 to get help from a translator to register for the vaccine. And in addition, refugees, foreign or temporary workers, students from abroad, you are all eligible for the free vaccine if you're living or working in British Columbia. So same phone number. If you phone in, you do not need a personal health number or an MSP number in order to get the COVID vaccine if you are living and working in British Columbia at this time. So those are my key messages for you. Again, I'm very happy to answer questions, but these will all be translated just momentarily. Please feel free to follow up on any parts that may be unclear. थैंक यू डॉक्टर इंग्रिड। सो डॉक्टर इंग्रिड का पैगाम ये है कि ये कोविड-19 वैक्सीन बिल्कुल महफूज है और ये बीमारी से इंतहाई मौसर हिफाजत फराम कर रही है और ये दुनिया भर में इस वक्त जानें बचा रही है। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि दुनिया की मुख्तलिफ रिप्यूटेड पब्लिक हेल्थ एजेंसीज़ ने इन वैक्सीन्स को सेफ़ करार दिया है और आप ये वैक्सीन्स मुकम्मल तौर पे इत्मीनान के साथ लगवा सकते हैं। ये भी बताना ज़रूरी है कि अगरचे कि वैक्सीन बहुत कम वक्त में तैयार करके इस्तेमाल के लिए मंजूर की गई है, लेकिन इसकी तैयारी में किसी भी मरहले को नज़रअंदाज नहीं किया गया और तमाम तर रिवायती हिफाजती तरीक़ा कार पर अमल किया गया है। वैक्सीन की तैयारी और इब्तदाई तहकीकात का तमाम रिकॉर्ड वैक्सीन की हिफाजती कमेटी के पास मौजूद है। तमाम दुनिया में करोड़ों की तादाद में लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि ये वैक्सीन बिल्कुल मुकम्मल तौर पे महफूज है। वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगवाने के तकरीबन 14 दिन बाद आपको इस बीमारी से तकरीबन 80% हिफाजत मिल जाती है। वैक्सीन का इस्तेमाल हामला, दूध पिलाने वाली ख़वातीन और मुस्तकबिल में माँ बनने वाली ख़वातीन के लिए भी महफूज है। यहाँ पे ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी डायबिटीज़, ज़ियाबतीज़ या किसी इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड कंडीशन का शिकार हैं, तो फिर भी आपके लिए वैक्सीन मुकम्मल तौर पे महफूज है, बल्कि ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीन लगवाने से ना सिर्फ आप खुद इस बीमारी से महफूज रहते हैं, बल्कि इस बीमारी को अपनी कम्युनिटी हल्के में फैलने से रोकने के लिए भी मददगार बनते हैं। वैक्सीन आपको बीमारी से हिफाजत देने के साथ साथ आपके करीबी दोस्त और अहबाब को भी इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही हमारी कम्युनिटी या हल्के में वैक्सीन शुदा लोगों की तादाद बढ़ेगी, उतनी ही इस बीमारी के फैलने के इम्कानात कम होंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये वैक्सीन उन लोगों को भी लगवानी चाहिए जो पहले इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं और सेहतयाब हो चुके हैं। अगर आप पहले इस बीमारी का शिकार हुए हैं, तो ये मत समझिए कि आप वैक्सीन की ज़रूरत से बेनियाज़ हैं, आपको वैक्सीन ज़रूर लगवानी पड़ेगी। और अब ये आसानी के लिए आप अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप ये सामने देखें तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का नज़र आ रहा होगा। तो ये इसका एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, ये है fraserhealth.ca/vaccine। इस पे आप जाएँ और इस पे आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ और मुकम्मल इत्मीनान के साथ आप अपनी वैक्सीन के लिए लगवाएँ। एक और बात बहुत बताना ज़रूरी है कि अगर आपको किसी किस्म की ज़बान या ट्रांसलेशन से मुतल्लिक़ कोई मसाइल हैं, तो आपके लिए हमने एक और सहूलत पैदा की है कि आप इस नंबर पे, जो कि नंबर है 833-838-2323, इस पे आप कॉल करें और इस पे आप नंबर 3 दबाएँगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसलेटर की सहूलत वहाँ पे मुहैया कर दी जाएगी। तो अगर आपको ज़बान का किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पे कॉल करें। मैं रिपीट कर देता हूँ, 833-838-2323 और जब आप जाएँ तो आगे आपका ऑप्शन है नंबर 3 का, आप ये जाके वहाँ पे लगवा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप महाजिर हैं, आप रेफ्यूजी स्टेटस पे हैं, अगर आप फॉरेन वर्कर हैं, चाहे टेम्परेरी हैं, चाहे परमानेंट हैं, अगर और या आप स्टूडेंट हैं, गैर मुल्की तालिब इल्म हैं, लेकिन अगर आप बीसी के रिहाइश पज़ीर हैं, तो आप भी यहाँ पे लगवा सकते हैं। आपको पीएचएन वगैरह नंबर की ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन इंतहाई ज़रूरी है और डॉक्टर इंग्रिड टाइलर और तमाम फ्रेज़र हेल्थ लीडरशिप इस चीज़ को एम्फसाइज़ करिए कि आप चाहे आपके पास पीएचएन कार्ड है या नहीं है, आप ज़रूर इस नंबर पे जाएँ। आप पहले इस पते पे जाएँ, वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करें, लेकिन अगर आपको कोई ज़बान से मुतल्लिक इश्यूज़ हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया और अब डॉक्टर इंग्रिड टाइलर आपके सवालों के लिए मुंतज़िर हैं। अगर आपके ज़हन में कुछ शकूक हैं, शुबहात हैं, कुछ सवाल हैं वैक्सीन से मुतल्लिक, तो प्लीज़ आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर टाइलर और हबीब आपका इन सारी मालूमात फराहम करने का। बहुत से कॉमन सवाल हैं जो हमारी कम्युनिटी में इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक ये है कि किस किस को ये वैक्सीन मिल सकती है, जैसे कि आपने पहले बताया कि कुछ ये वैक्सीन फ्री है और सब लोग जो बीसी में रहते हैं उनको मिल सकती है। क्या इस पे आप थोड़ा सा और तफसील फराहम कर सकते हैं? Sure. So Dr. Ingrid Tyler, she's asking that who is eligible for these vaccines in BC? As you have already mentioned that almost everyone is, but is there some ineligibility criteria for someone who cannot take vaccines? Is it for everyone? Can you expand that on a little bit? Sure. So there are two parts here. The first part is who is currently being vaccinated in British Columbia. And right now, once you register for the vaccine, if you are over 58 years old, you will be called or texted or emailed your choice when you register to come and book a vaccine appointment. So vaccinations are currently being given to those 58 and over. If you live in a high COVID neighborhood, these were announced by the province last week, then you will be called in for a vaccine if you're 40 plus. And you are eligible for that vaccine now. And if you choose to get AstraZeneca vaccine, you're able to access this through a pharmacy if you're 30 years or older. So right now that we are asking everybody to register, that's the key. And once you're registered, we will contact you to book an appointment. Right now, as I said, it's age 58 or 40 if you're in a high-risk neighborhood, or 30 for AstraZeneca. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर टाइलर। डॉक्टर टाइलर का कहना ये है कि इस वक्त वैक्सीन के लिए दो किस्म के प्रोसेस साथ साथ काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि अगर आपकी उम्र 58 साल या उससे ज़्यादा है तो आप लोगों को फ़ोन मैसेज ईमेल या टेक्स्ट आएगा जिसके ज़रिए आपको कहा जाएगा कि आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं और आपको बताया जाएगा, मालूमात फराहम की जाएंगी किस जगह आप जाके अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी में काफ़ी लोग एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कोविड-19 की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ मुतासर हो रहे हैं। उन इलाकों के लिए फ्रेजर हेल्थ ने वैक्सीन पॉपअप क्लिनिक जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं और उन इलाकों के जो मुकीम हैं वहाँ रहने वाले हैं वो भी जो है वो अपने आप को वहाँ ऑनलाइन रजिस्टर करवाने के बाद वैक्सीन ले सकते हैं। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो एक 4 वैक्सीन्स में से एक टाइप की वैक्सीन है, उसके लिए 30 इयर्स एंड अबव एनीवन कोई भी जो फ्रेजर हेल्थ या कहीं भी रह रहा है वो अपने आप को ऑनलाइन या फ़ोन के ज़रिए रजिस्टर करवा के या अपनी फार्मेसी में फ़ोन करके उस वैक्सीन के लिए एलिजिबल है और वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। हबीब, इज इट मैंने कोई चीज़ मिस तो जी नहीं की? बस लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप वेट ना करें। अगर आप इसमें से किसी भी एलिजिबिलिटी पे पूरा नहीं आ रहे तो आप अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करवाएं। जब बिल्कुल। आपका टाइम आएगा तो हम कॉल आ आपको कॉल कर लिया जाएगा। बिल्कुल। जी। So, Habib, you asked about if there's any medical reason you might not be eligible. Oh yeah, any reason for this purpose I was wondering if I don't think आपका सवाल मेरा ख्याल है medical reasons की वजह से नहीं था, but if you would like to expand on that if there are any certain medical conditions which would preclude someone from receiving this vaccine. That's an important question. Yep. There are, the answer is almost none. There are only two reasons why you may, the word is contraindicated, why you may not want to get the vaccine. One is if you've had an allergic reaction to a COVID vaccine. So if you had an allergic reaction to your first dose of COVID vaccine, you may not want to, you may need to consult with the doctor about getting the second dose. But the second reason is if you have an allergy
to a substance called propethylene glycol. So if you've had sort of medical procedures and you know that you have an allergy to this substance, you do not want to get this vaccine. However, it's important to note that actually having an allergic reaction to the vaccine is very, very rare. It does not happen often. When we vaccinate 1 million people, a very small number, trying to do the math quickly in my head. I'm not that good at math. When we vaccinate 100 people, less than one of them will get an allergic reaction. So I think it's really important to know that it's possible to have an allergic reaction, but it's very, very rare. And if you've had a previous allergic reaction, you do not want another vaccine. I have one more point on this. All the staff at the vaccine centers are trained, prepared, and ready to respond to anybody who has an allergic reaction. Like I said, it rarely happens, but we have the medicine there, we have the trained staff, and we are ready to respond should it happen. So that's just an added layer of safety for anybody who's getting their COVID vaccine. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बतानी ज़रूरी है कि आपको अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वैक्सीन आपके लिए बिल्कुल बुरी नहीं है। सिर्फ 2 मौके ऐसे हैं जहाँ पे आपको वैक्सीन के मुतालिक एहतियात करनी पड़ेगी। सबसे पहला मौका ये है कि अगर आपने पहले एक दफ़ा कोविड-19 वैक्सीन लगवाई है और उससे आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, तो फिर आप सेकंड डोज़ मत लगवाएँ, आप पहले अपने डॉक्टर से राब्ता करें। डॉक्टर अगर आपको क्लियर करेगा तो वो फिर होगा। यहीं पे मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये एलर्जिक रिएक्शन बहुत, बहुत, बहुत कम है और डॉक्टर टायलर बता रही थीं कि तकरीबन अगर 100 लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं तो 1 या उससे भी कम लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होता है और अगर खुदा ना ख़ास्ता हो भी जाए, तो हमारी जो वैक्सीनेशन फैसिलिटीज़ हैं, उसका स्टाफ मुकम्मल तौर पे ट्रेन्ड है, प्रिपेयर्ड है। वो अगर कोई हल्की-फुल्की कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो उसी वक़्त आपको स्टेबलाइज़ भी कर देंगे। लेकिन ये बात आप ज़हन में रखें कि अगर आपको एक दफ़ा एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो फिर आप काइंडली दूसरी डोज़ मत लगवाएँ। आप अपने डॉक्टर से राब्ता करें। और दूसरा इन्होंने ये बताया कि एक ख़ास किस्म का केमिकल कंपाउंड है, उसको कहते हैं प्रोपिलाइन ग्लाइकोल समथिंग। ये अगर आप समझते हैं कि ये आप इससे एलर्जिक हैं, propylethylene glycol, right? Something like that. So it's organic chemistry. I was not good at organic chemistry. So अगर आप propylethylene glycol से आपको किसी किस्म का एलर्जिक रिएक्शन है तो आप फिर भी मत लगवाएं, क्योंकि ये आपके लिए आपको एलर्जी कॉज कर सकती है। और अगर फिर हम रिपीट करेंगे कि अगर आपने पहले एक दफ़ा डोज़ लगवाई है, आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, तो आप बिल्कुल भी दोबारा मत लगवाएँ। लेकिन अगर हो भी गया, जिसके चांसेस बहुत, बहुत कम हैं, 100 में से 1, तो फिर हमारा स्टाफ मुकम्मल तौर पे ट्रेन्ड है कि वो इस सूरत-ए-हाल को सँभाल सकेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर टायलर एंड हबीब इसको बताने का। इसी के साथ में एक और इसी मौजू से जुड़ा सवाल पूछना चाहती हूँ। एक ये कंसेप्शन है कि मे बी इस वैक्सीन में कोई ऐसी चीज़ इसके इंग्रेडिएंट्स में है जो हलाल नहीं है या जो मुसलमान या और लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते एलर्जिक रिएक्शंस के अलावा। तो क्या कोई ऐसी बात सही है ये या ये कि सिर्फ मिसकंसेप्शन है ये? Thank you. So what she's asking is there are some misconceptions going around in the communities that there might be some ingredients in this vaccine which might not be compatible with the Islamic beliefs or Religiously not allowed. or they might be harmful for the people. There are मैं आपको एक मिसाल दे सकती हूँ, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी में पोर्क या पोर्क से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं इट्स अलाउ नहीं है, वो इस्तेमाल नहीं होती। इसी तरह हमारी जो हिंदू मज़हब है उसमें लोग जो है गाय के इस्तेमाल में और या उसकी कोई डेरिवेटिव चीज़ें हैं, उन लोगों को वो सही नहीं समझते, मजहबी तौर पे वो ठीक नहीं समझा जाता। तो क्या इस वैक्सीन में कोई ऐसी चीज़ें शामिल हैं? she's giving some examples that in Muslim culture,
it's not permissible to use pork, pig-related substances into your medicine. And in Hindu culture, they are not allowed to use cow-related products into their medicinal products. So would you like to elaborate on that? If there are certain ingredients which might not be permissible in certain cultural context? Yeah, no problem. If you look at the list of ingredients of the vaccines, and they are posted online if you're wanting to look them up, there's actually very few ingredients. It's not very complicated. There's the part of the vaccine that the medical part that makes you boost your immune response. But the rest is just a few simple chemicals that help, put it into liquid and allow it to be injected. And they're very common materials that are, involved in lots and lots of other medicines and kind of medical interventions that we use. There's nothing very new or different about a vaccine compared to the rest of pharmaceuticals and medicines that we use. There's nothing in there that is animal derived, and any animal for these vaccines. It's all Chemicals. other chemicals. Nothing's, I don't point in getting into all the names, but there's nothing in there for these vaccines that's animal derived. बहुत बहुत शुक्रिया. So डॉक्टर इंग्रिड टायलर ये कह रही हैं कि आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के मुतालिक परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इसमें कुछ बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं और ये बिल्कुल इत्मीनान रखें कि इसमें किसी किस्म का कोई जानवर रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, चाहे वो पेग है, चाहे वो काऊ है या कुछ और इस तरह का कोई इंग्रेडिएंट नहीं है. और इसमें नॉर्मली वही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं. आप जो पहले वैक्सीन्स लगवा रहे हैं, अपने बच्चों को लगवा रहे हैं, वो सब ठीक है. And with your permission, I would like to add something. So these vaccines have been allowed by the Muslim authorities all around the world. They say that you can have this vaccine. This is perfectly okay. तो मैं कहना ये चाह रहा था कि चूंकि मैं खुद भी मुसलमान हूँ, तो मुख्तलिफ हमारे मजहबी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसको बिल्कुल सेफ करा दिया. आप पाकिस्तान में देखें, आप अमेरिका की इस्लामिक एसोसिएशन को देखें, तो बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई इशू नहीं. बहुत शुक्रिया हबीब इस पे एलैबोरेट करने का. और मैं फिर एक दफ़ा दोबारा यही बात आपको कहूँगी कि ये चारों किस्म की वैक्सीन जो कनाडा में अप्रूव की गई हैं यूज़ करने के लिए, उनमें से किसी में भी कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जो रिलीजियसली अलाउड नहीं है किसी भी रिलीजन के लिए. इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि ये जो है, क्या रमज़ान में ये लोग जो हैं, जो अभी फास्टिंग का मंथ है, तो इसमें लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं? Okay, so the question she's asking that right now, Muslims all around the world are observing the month of fasting. They are fasting like from dawn to dusk. So is it okay to have a vaccine while they are fasting? तो आई थिंक डॉक्टर टाइलर भी इस पे बताएंगी, मगर मैं खुद आपको ये बता दूं कि जैसे हबीब ने पहले भी कहा था कि इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज यूके की एसोसिएशन ने बिल्कुल इसको अलाउ किया है कि इसका कोई आपका रोज़ा इससे टूटेगा नहीं. बाकी डॉक्टर टाइलर आपको बताएंगी कि इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पे होंगे या नहीं, आपके आप जब रोज़ा रख रहे होंगे. So what she's saying is that she has elaborated just what I already said, and she has asked the same question, that if there are going to be any harmful effects on the body while we are fasting, while the Muslims are fasting during this month. So it's a 30-day period. 15 days have already passed, and there are like 15 days left. I've also heard that various authorities have determined that it's okay to get the vaccine when you're fasting. Mm-hmm. I just want to add that there are some side effects to the vaccine. It's common to get some pain where they injected it in that injection site. It's common to feel a bit tired or sore or maybe have a headache
or just feel kind of a little bit like you have a cold for a few days after the vaccine, that's your body building the immune response. When you have a cold, you feel tired and sick because your body is fighting that cold, is fighting that virus, is making immunity. Same, it's not dissimilar from the vaccine. It's actually a good thing that your body is using up some energy here to make that immunity for you, so that you're protected from COVID in once your immunity is built up. So there are some side effects after you get the vaccine. They're usually very, very mild. And I don't have any reason to believe that those side effects would be worse if you happen to be fasting. सो डॉक्टर इनके ट्रायल का ये कहना है कि आप बिल्कुल आराम से सुकून से लगवा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके रोज़े में फास्टिंग के दौरान, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप बाजू में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आपको यहाँ पे हल्की सी पेन हो सकती है कुछ दिनों के लिए। आप कुछ दिनों के लिए ये फ़ील कर सकते हैं कि आप थके हुए हैं, आपको फ़ीवर हो रहा है, आपको थोड़ा-सा बुखार सा हो रहा है, आप या आपके सर में दर्द हो रहा है। फ़ीवर तो इतना नहीं होगा लेकिन थकावट होगी, हेडेक सा होगा, ये नॉर्मल है। या आप थोड़ा-सा आप सर्दी लगना महसूस हो सकते हैं। आप इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये परफेक्टली नॉर्मल हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है। जब भी हम इसमें एक इम्यूनिटी क्रिएट करने जा रहे हैं, तो बॉडी थोड़ा-सा रिस्पॉन्स देती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को साइड इफ़ेक्ट्स हों, लेकिन अगर कुछ लोगों को हो जाएँ, तो इसमें घबराने की और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर टायलर। और मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी कि इस वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो किसी भी फ्लू शॉट जो आप लेते हैं या कोई और वैक्सीन लेते हैं, इससे फ़र्क नहीं है। उसी तरह का आपको दर्द या फटीग या कुछ थोड़ा-सा हल्का-सा ज़ुकाम, बुखार होगा, मगर ये मुख्तलिफ नहीं है बाकी किसी और वैक्सीन से। एक और चीज़ जो ज़्यादा सामने आ रही है वो ये है कि अगर हमें ये चॉइस मिल सकती है, अगर हम अपनी वैक्सीन सेलेक्ट करें कि हमें ये वाली वैक्सीन नंबर ए लेनी है या वैक्सीन नंबर बी लेनी है। Sure. So, what she's asking is that there are some questions around the choice of the vaccines. So, do we have the choice to opt what kind of vaccine we want to have, or is it beyond our choice? As you have already told that if we are willing to take AstraZeneca, then yes, we can register if we are like at least 30 years old and we can get it at any pharmacy. But the question is, if we want to register it over here and if we are called for the vaccine, would we be given a choice to choose from these 4 vaccines, or is it like, um, Yeah, understood. So once you register, when you're called to come into the clinic to get a vaccine, the vaccines that are available at that clinic are Pfizer and Moderna vaccines. And when you're at the clinic, there is no choice between those two mRNA vaccines for various reasons, including ways in which the supply comes in and gets distributed across the region. So Pfizer and Moderna are being given at the clinics after you register. The AstraZeneca vaccine is quite clear when you may be showing up for an AstraZeneca clinic, be that one of the more recent drop-in clinics or going to a pharmacy to get the AstraZeneca vaccine. And when you go to one of those opportunities to be vaccinated, AstraZeneca is the only product that's available there. तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो सिर्फ 2 किस्म की वैक्सीन्स हैं, फाइज़र और मॉडर्ना, जो कि आपको लगेंगी। अगर आप तशरीफ़ लाते हैं तो इनमें से ही कुछ होगा, और ये क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक़्त सप्लाई चेन का भी है, इश्यूज़ हैं, सारा कुछ है, तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि बेस्ट वैक्सीन आपको लगे, लेकिन इसमें ये चॉइस का नहीं हो सकेगा। बाकी आप बिल्कुल इत्मीनान रखें कि जो भी वैक्सीन आपको लग रही है वो ज़बरदस्त है। और बात रह गई एस्ट्राज़ेनेका की, तो एस्ट्राज़ेनेका की ऑप्शन सिर्फ चंद ड्रॉप इन क्लिनिक्स पे और चंद फार्मेसीज़ पे मौजूद है, अगर आप वहाँ जाके लगवाना चाहें, ये प्योरली आपकी मर्ज़ी है।
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप वैक्सीन लगवाएं चाहे कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब। डॉक्टर टायलर ये कह रही हैं कि जो एस्ट्राजेनेका है वो सिर्फ फार्मेसी के थ्रू एस्ट्राजेनेका ही फार्मेसी के थ्रू अवेलेबल है। एस्ट्राजेनेका के अलावा बाकी जो वैक्सीन हैं वो आप बाकी वैक्सीनेशन सेंटर से लगवा सकते हैं। एक और चीज जो मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर टायलर कि ये सारी वैक्सीन जो हैं ये एक जैसी ही मौसर हैं या इनमें से कुछ जो हैं वो ज्यादा मौसर हैं और कुछ जो हैं वो कम मौसर हैं? So the question she's asking is that are all of these vaccines equally effective, or some of them are better than others? It's a very good question. From a scientific perspective, I'm unable to answer that question with certainty because they haven't done any studies that directly compare Pfizer, Moderna, AstraZeneca, or Johnson & Johnson, which is coming. So we only have the studies that will show, how well did Pfizer do in a certain population under certain circumstances? How well did AstraZeneca do in a certain population under certain circumstances, et cetera, et cetera. So we know that all the vaccines are effective. They build your antibodies, they protect you against COVID, they prevent hospitalization and death. That is clear from every single study, regardless of the type of vaccine. Some of these studies have reported different percentage rates of efficacy based on the science that they did for that one vaccine, but those are not technically comparable because they've not yet released a study that compares the vaccines directly against each other and is able to definitively tell us whether one is better or worse. So डॉक्टर टायलर का ये कहना है कि ये तमाम वैक्सीन जो इस वक्त अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, ये सब की सब एक ही जैसी इफ़ेक्टिव हैं। जो मुख्तलिफ तहकीकात हुई हैं जिनके बाद ये वैक्सीन मंजूर की गई थी इस्तेमाल के लिए, उन सब ने ये शो किया है कि ये तमाम वैक्सीन कम्प्लीटली मौसर हैं आपको कोविड-19 की बीमारी से बचाने के लिए, उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, इवन उसका नतीजे में जो लोगों की अमवात हो रही हैं उन सब से भी बचाने के लिए। अभी तक कोई ऐसी तहकीक सामने नहीं आई है जिसमें इन तीनों वैक्सीन्स को एक ही पॉपुलेशन में या एक ही किस्म के लोगों में स्टडी किया गया हो और ये पता चला हो कि इनको जब तीनों को इकट्ठा हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मगर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये सब की सब जो हैं ये बीमारी को रोकने में मुयस्सर हैं। और इसके बाद ये है कि इनकी या कोई और चीज आप ऐड करना चाहेंगे अभी? नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त, आपने सारा कुछ कवर कर लिया। सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात ये है जानने वाली कि ये देखें, इसकी अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा है। कोई डायरेक्ट कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। हर वैक्सीन को इंडिविजुअली टेस्ट किया गया है और पता चला है कि वो आपको बचाती हैं। ये 80 हमने पहले ज़िक्र किया कि 80%। अगर आपको खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन हो भी जाती है तो वो सीवियर होगी ही नहीं। वो आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन की तरफ और डेथ की तरफ नहीं लेके जाएगी। ये वैक्सीन का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगर आपको होगा तो हल्के-फुल्के सिम्पटम्स आएँगे, लेकिन वैक्सीन की सबसे ज़्यादा अफ़ादियत ये है कि ये आपको आपके सिम्पटम्स को कॉम्प्लेक्स नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया हबीब। एक और जो सवाल जो ज़्यादा पूछा जाता है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये वैक्सीन जो है ये आपके जिस्म में ब्लड क्लॉट्स या खून जमने के ख़तरे को बहुत ज़्यादा कर देती हैं। तो इसकी वजह से जो है वो और बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं या लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे डॉक्टर टायलर? So there are some misconceptions going around the fact that it has been reported that some of the vaccines are actually creating some complications like blood clots and all that. So how would you like to explain that? Yeah, so there has been reports of AstraZeneca and Johnson & Johnson as potentially being associated with
some severe blood clots occurring in younger people, based on studies that they were doing in Europe several months ago. This is a very important safety signal for us to continue to watch carefully. Because the vaccines are being monitored by scientists and regulators so carefully, they stopped providing the vaccine as soon as they identified this safety signal in order to be able to investigate it further. Because everybody wants these vaccines to be safe for everyone. After several weeks of further investigation, the scientists and the regulators came to the conclusion that the risk of this happening in the when you get vaccinated is not is reasonable within the risk of medical intervention, right? All medical intervention has some risk. You don't go to surgery or take a blood pressure pill or even, I don't know, even I'm trying to think of something simple, but it's not coming to mind. Even if you are like having a simple cut. Any other Yeah, vaccine? even catch the flu, Yeah. without necessarily having some risk of a poor outcome. So they did come to the conclusion that given the benefit of the vaccine and given how bad COVID is and how many people die of COVID and how serious that outcome is, that the protection the vaccine gives you is a much greater benefit than the risk of this side effect that they studied. So with the side effect, we need to be aware of it. We continue monitoring it. If you get that vaccine, you need to, watch for these very rare signs and symptoms, not unlike when I was talking about allergies, same idea, you watch for the very rare signs and symptoms, and we can intervene. They are developing treatments and interventions, and the risk is very, very, very low. You are more likely to have a serious blood clot or a serious long-term sequelae, including death from actually catching COVID, than from being protected from COVID by this vaccine. बहुत शुक्रिया डॉक्टर टाइलर। डॉक्टर टाइलर का कहना है कि 2 किस्म की वैक्सीन जो कनाडा में अवेलेबल होंगी, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन। इनके साथ कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि ये एक बहुत बहुत रेयर किस्म का साइड इफेक्ट ब्लड क्लॉट करती हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई थी, उस वक्त से हेल्थ ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग हेल्थ कनाडा, ये हम सब और साइंटिफिक कम्युनिटी इन सब रिपोर्ट्स को मॉनिटर कर रही है और इनकी वैक्सीन की सेफ्टी को देखा जा रहा है। अब जबकि कई लोग जिस वैक्सीन को लगवा चुके हैं और जब पूरी उन्होंने तहकीकात की हैं, उसके बाद ये बात सामने आई है कि ये जो साइड इफ़ेक्ट जो इन 2 वैक्सीन्स के साथ मुतल्लक किए गए हैं, ये किसी भी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से फ़र्क नहीं है। जैसे आप कोई भी नई मेडिकेशन लेते हैं या आपको कोई नई इंजेक्शन लगवाते हैं या दवाई लगवाते हैं, तो चांस होता है कि आपको कोई बहुत एक तो कॉमन किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या एक बहुत रेयर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो लेस देन 1% पॉपुलेशन में हो सकते हैं। तो इसी तरह का ये एक साइड इफ़ेक्ट है जो बहुत बहुत कम और बहुत रेयर है और बहुत कम लोगों में अभी तक देखा गया है, मगर इसको अभी तक इसकी मॉनिटरिंग जारी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो अहम बात समझने के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आपको कोविड-19 की बीमारी हो जाती है या आपको ये इन्फेक्शन लगता है, तो आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा हैं
बजाय इसके कि जो अगर आप ये वैक्सीन लेंगे उसकी निस्बत। सो वैक्सीन का बहुत बहुत कम चांस है ब्लड क्लॉट बनने का, मगर अगर आपको ये बीमारी होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोगों को ये ब्लड क्लॉट बनेंगे और ये हो सकेंगे। मगर ये साइड इफ़ेक्ट्स किसी और वैक्सीन या किसी और दवाई की साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा नहीं है। हबीब, अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो आप नहीं, नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। डॉक्टर टायलर का बिल्कुल ये कहना था कि इसके कोविड की वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस होने का ज़्यादा चांस है और इस वैक्सीन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस बिल्कुल कम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह हमें रिस्क तो बाहर है, अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो रिस्क तो है कि एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन बिल्कुल उसके अकरेंसेस बहुत कम होते हैं बहुत कम और वो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आप इसको बिल्कुल, और अगर इसमें ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम हुआ या नज़र आया होता तो हेल्थ कनाडा ने और ऑफिशियल्स ने उसको लगने ही नहीं देना था। तो जी। उनके बेनिफिट्स और आउटकम देके, जिस तरह हम एक कॉमन पैरास्टामोल भी खाते हैं तो उसके भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हम खाते हैं वो अलाउ होती है। तो यस। दूसरी बात ये डॉक्टर टाइलर का कहना था कि जिस तरह उन्होंने आपको बताया था कि आप अपने कॉमन वाले साइड इफेक्ट को मॉनिटर करते हैं, आपके बाजू में दर्द हो रहा है या आपको बुखार हो रहा है, इसी तरह अगर आपको कोई ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ अनयूजुअल है जो आपकी रूटीन में नहीं है, तो आप ज़रूर फौरन अपने जो है वो डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें, या आप इमरजेंसी में भी इमरजेंसी में। इमरजेंसी में एक और जो सवाल पूछा जा रहा है आम तौर पे डॉक्टर टाइलर, वो ये है कि अगर मैंने 2 डोजेस वैक्सीन की मुझे मिल गई हैं, तो क्या मैं जो है वो अब सेफ हूँ, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, या कि ये मैं अब इम्यून हूँ और मुझे कोई खतरा नहीं होगा इन्फेक्शन लगने का? So adding to that question, so her question is that if I have already been vaccinated and I have been given 2 doses, am I safe to travel? This is the question which came from her. And adding to that question, my question is that if someone has traveled from, let's say, India or Pakistan, they have taken their first dose over there, should they be taking their second dose over here? In terms of the first question, the short answer is we all need to abide by whatever travel rules and advisories may currently exist. I don't know what they all are, but I know some countries have entry requirements. Other countries are specifically limiting flights or travel from certain places. And some in some countries, vaccination may be part of their requirement. In other countries, they're simply prohibiting travel because of the amount of cases that there are in the population. In British Columbia, until we get enough people vaccinated, we are asking everybody to continue to use COVID protocols, to not gather in large groups, to wear your mask when you need to keep distance from people, and to stay at home when you're sick. It will still be a few months before we have the opportunity to give everybody both their doses. And we're asking everybody to just maintain their COVID precautions until we can be sure that COVID is going to have a really hard time transmitting between people. Because right now there's still enough unvaccinated people that COVID can get around. Sure. I'll get to the second question. Sure. So डॉक्टर टाइलर ये कह रही हैं कि ट्रैवल एडवाइजरीज इंटरनेशनल लेवल पे बनाई जा रही हैं, तो आप काइंडली उन ट्रैवल एडवाइजरीज को फॉलो करें। जो भी, अगर आप किसी मुल्क में जा रहे हैं तो उनकी कुछ एंट्री रिक्वायरमेंट्स होंगी। जैसे अगर मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ तो मेरे लिए यहाँ से नेगेटिव पीसीआर टेस्ट होना ज़रूरी है, मेरे वैक्सीनेशन कार्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी आपकी इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस या एडवाइजरीज हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये इसके बगैर आपको वैक्सीन से इसको अभी फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम जब, डॉक्टर टाइलर का ये कहना था कि जब तक हम एक
बड़े मजमे को, एक बड़े हिस्से ऑफ पॉपुलेशन को जब तक वैक्सीनेट नहीं कर लेते, तो अगर आपने वैक्सीनेशन करवा भी लिए तो फिर भी आपने एहतियाती तदाबीर नहीं छोड़नी। आपने ग्रुप्स में इकट्ठे नहीं होना, आपने मास्क पहनना है। आपको अगर सिम्टम्स आ रहे हैं या कोई इशू है या आप किसी के साथ इन कॉन्टैक्ट हुए हैं तो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें और दूसरे लोगों से 6 फीट का डिस्टेंस रखें। ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको वैक्सीनेशन लग भी गया है। हर बंदे को अपनी प्रिकॉशंस फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The second part of your question was around getting a second dose here in BC if you've been vaccinated elsewhere. And your example was Pakistan and India, but you may be coming from Ontario or Alberta. Yeah. So the short answer is yes. If you are becoming eligible for your second dose here in BC, you should get it. Now, according to our guidelines in BC, you're eligible 4 months after your first dose. So that's approximately the beginning of January. So if you got your first dose in another province or country in the beginning of January, you should register. It will give you the option to state this, and you should get your second dose when you become eligible for that. For most of us, that's still a little ways in the future for that 4 months from the first dose. But if you're motivated, register now, because once you're registered, you don't have to think about it anymore, and you will get a notification when you're meant to book either your first or your second dose. तो बहुत- प्लीज गो अहेड। तो वो ये कह रही हैं कि बिल्कुल अगर आपने इस कनाडा के अंदर ओंटारियो से, अल्बर्टा से, किसी और जगह से आपने अपनी पहली डोज लगवाई है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, आप दूसरी डोज यहाँ पे बिल्कुल लगवाएं। अगर आप कनाडा से बाहर, इंडिया, पाकिस्तान से कहीं तशरीफ़ ला रहे हैं तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी अगर जनवरी के शुरू में पहली डोज लगी थी, जब डोजेस लगना शुरू हुई थी, तो फिर ये उसके 4 महीने बाद आपको दूसरी डोज लगेगी। लेकिन ज़्यादातर, हम में से ज़्यादातर लोगों को थोड़ी सी लेट डोज लगी है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट अपने आप को रजिस्टर करवा लें ताकि आपके सर से एक परेशानी ख़त्म हो जाए। आपने एक दफ़ा रजिस्टर करवा लिया तो फिर हम आपको खुद ही मैसेज भेज देंगे और आप आके अपनी सेकंड डोज लगवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत So we have time for one more question. ओके। Meanwhile, can we check if we have someone online? सबसे जो एक और जो क्वेश्चन मिसकंसेप्शन या क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि मुझे कोविड-19 पहले से हो चुका है, तो क्या मुझे भी अब वैक्सीन लगवाने की जरूरत है या नहीं? So yeah, it's the most common question that I had COVID infection somewhere in the past. So do I still need to take that vaccine? Because after the infection, I was immunized and all that. That's a very good question. We do recommend that after you have a COVID infection, that you do get both doses of the COVID vaccine. We don't know how long immunity from a COVID infection may last. The vaccines, as we've said, are very highly studied and monitored and are likely to be a bit more predictable in their protection against COVID in the long term than having had the infection itself. So we still want people who've had COVID to get the vaccine, and you can get it anytime after you are feeling better after the infection. तो डॉक्टर इंगे ट्रायल का ये कहना है कि अगर आपको पहले एक दफ़ा इन्फेक्शन हो भी चुकी है तो हमारी बहुत पुरजोर आपको ये तजवीज़ है, हम रिकमेंड करते हैं इसे स्ट्रांगली कि आप प्लीज़ दोबारा दोनों डोजेस कोविड वैक्सीन की लगवाएं, क्योंकि अभी तक डेटा इस पे क्लियर नहीं है कि जो आपकी इम्यूनिटी आपकी इन्फेक्शन से बनी थी वो कितनी देर लास्ट करेगी। लेकिन इसके बारे में तो हम क्लियर हैं कि ये आपको सर्टेन प्रोटेक्शन दे रही है। तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि आपको अगर एक दफ़ा इन्फेक्शन हुई
आपके सिम्टम्स ख़त्म हो गए, अब आप ठीक फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ जाके आप अपनी वैक्सीन लगवा लें। So thank you so much for taking the time to listen to us today and to learn about COVID vaccine and to get your questions answered. It's fantastic that you have been here with us today and had a chance to get some common questions about COVID vaccine answered. I hope that you will now go register for the vaccine. It's really important. Reminder, the website is under me there on your screen. And if you would like translation support to register for the free vaccine, call 1-833-838-2323 and press 3 to help get a translator and register for your free COVID vaccine. Thank you. Thank you so much. आपकी आमद का बहुत-बहुत शुक्रिया। हम बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं कि आप लोगों ने हमें अपना टाइम दिया। ये फ्रेज़र हेल्थ और हम सारे इस भरपूर कोशिश में हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को मज़बूत और उनको महफूज़ बना सकें। तो अगर आप प्लीज़, ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है बिल्कुल नीचे करके। और अगर आपको किसी किस्म का लैंग्वेज या ज़बान का बैरियर है, कोई इस तरह का इश्यू है, तो आप काइंडली इस नंबर पे 1833-838-2323, मैं रिपीट करता हूँ, 833-838-2323, इस पे आप कॉल करें और नंबर 3 को प्रेस करेंगे तो वो आपको ट्रांसलेटर की सहूलत दे देंगी। और हमारी उम्मीद है कि आप लोग अपनी वैक्सीनेशन करवाएंगे और इस तरह हम अपने माशरे को बेहतर तौर पे महफूज बना सकेंगे। जी शादी। बहुत शुक्रिया हबीब एंड डॉक्टर टाइलर। मैं भी बस यही बात आपको आखिरी कहना चाहूँगी कि ये वैक्सीन बहुत सेफ है, ये हर एक के लिए फ्री है। इसके रजिस्टर होने का तरीका आपको पता है, आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए और जब आपका टाइम आएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा वैक्सीन के लिए। दूसरी बात ये है कि ये जो सेशन है क्वेश्चन आंसर का, ये रिकॉर्डेड होगा और बाद में ये फ्रेजर हेल्थ की वेबसाइट पे अवेलेबल भी होगा। That's it. Thank you. Thank you. थैंक यू डॉक्टर।